Okay guys, so audio issue thila, I can understand. Audio issue thila. Okay. So PSC mains test series program ଆମର 26 ନଭେମ୍ବର ଅଟୋମେଟିक वे होची एवरीडे आपन को दुटा क्वेश्चन आगु को डेली आपन को डेली फ्री मेंस पी तो ये जीएस पेपर 2 रे 23 रे सेइथरे पॉलिटी पार्ट जानि छथि the questions while celebrating 5 years of there is a women in 9 years of sari triggered first amendment to constitution. What do you understand by cooperative? Does it exist in India? What are the role, fact, and case of the what are the similarities and what is process of due? देखो ये सबू क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चन process law and how it differ from right about ego the current affairs linked. Yes, explain the role of status of so पंचायत वुमेन रो जोंटा कि 1/3 रिजर्वेशन ता ऊपर आपण एवं गिव सजेशन दैट कि केमिति तार स्टेटस आल्सो मेंशन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी पंचायती राज फॉर्म इन the state continue to have unresolved border dispute आंध्र प्रदेश तो ये गोटे इंटर स्टेट रिलेशन ऊपर ये क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन एवरी ईयर वेस्ट MSME development social justice part risk the role of finance commission ये the process and procedure appointment या ये न्यूज लिंक्ड क्वेश्चन मैं 19 पास रिजोल्यूशन गाइडलाइन फॉर जुडिशियल कंडक्ट ने तापरे करंट अफेयर्स এবং সেইথ এটা পকি লোকায়ত procedure and function fiction and so the advisory rule of civil in service. Three, what is the meaning and scope of sustainable development? Development very important topic. Yeah, question keep coming every year. Governor of power and functions. Okay, so one nation, one election. Use so you can predict the question by linking your current affairs. Repeatedly telling the that current affairs is a game change, foundation of Bible of your Gita of the preparation. Everything that is based on current affairs. Even paper one question linked current affairs. Then history, then geography question also linked to. Then GS paper 3 fully current. I saw you how current affairs came. So study current affairs. Don't skip current affairs. Don't trust on weekly or month. Yes, you can trust, but you need to read current affairs daily basis. That is for sure. Okay, so while celebrating 75 years of a woman in the 9 years of the first amendment of the Indian Constitution. First amendment तो कौन ना अति चंपकम राय रजन से ब्राह्मण वुमेन से मद्रास ये गोटे लीगल चैलेंज करथिले इन 1950
एथिपाई फर्स्ट अमेंडमेंट lead to first amendment of the Indian. Her case highlighted the tension between fundamental rights and directive. Basically, fundamental rights and directive principles while implementing the policies there is a conflict. Okay, এই টেনସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଇଏ ହେଇଥିଲା ସୋ ଡିପିଏସ୍ପି ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡamental ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ତ କ'ଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା 1948ରେ ମାଡ୍ରାସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ communal government that reserves seat in the education based on caste and दोराई राजन कौन कले दबा मना करागला despite being academically qualified as the quota for the brahmin was already तांको लाव करागला ने कने ब्राह्मण रो कोटा सिस्टम कर दिया कास्ट एंड ब्राह्मण कोटा अनुसार है कास्ट ब्राह्मण he filed a petition in Madras High से कहले जो गवर्नमेंट रो ऑर्डर अछि से वायलेट करि तार फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 51A जन ए कोन कहउची ना प्रोहिबिशन आर्टिकल 29(2) इक्वल एक्सेस टू ताकू से जाको आर्टिकल माने हाइलाइट करूची के फाइल कले मद्रास हाई कोर्ट रो वर्डिक्ट केस ये सुप्रीम कोर्ट रू ट्रांसफर करला किए ना मद्रास तो मद्रास वर्सेस राजन सुप्रीम कोर्ट रूल द कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर as it violate the article 51A and very and court मते कहला केला फंडामेंटल फेल ओवर डायरेक्टिव कोन ना स्टेट चाहिए डाउन ट्रेडेड सेक्शन कास्ट बेस but fundamental right एटी वाइल such as article promote welfare of the weak 6 article ए वायलेट करूची तो पर्टिकुलर आर्टिकल बेस्ड से माने बने जोटे वीकर सेक्शन पे प्रोविजन बट फंडामेंटल राइट को वायलेट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन केते डीप क्वेश्चन बेसिकली इट इज द डिबेट ओवर फंडामेंटल राइट एंड ता भीतर डिबेट रू ये क्वेश्चन आसी जजमेंट क्रिएटेड ए लीगल बैरियर टू कास्ट बेस्ड लीगल बैरियर भरिया काम कला कास्ट बेस्ड education to overcome this the government introduced the first central government हमारे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन तो करि परिबेनी सेथि पई गवर्नमेंट एडेड कला आर्टिकल 15(4) empower the state to make socially and educationally first amendment act including caste and केला तो 54 ये एड हला एवं तापरे रिजर्वेशन केला कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन तो चंपक दराय राजन case became a turning point in the constitution and balancing individual right with social quite 9-year study reshaped India for enabling affirmation action and tying the here. तो या रिलेटेड केस रिलेटेड बैकग्राउंड आम जानिले मद्रास हाईकोर्ट ऑर्डर एंड आर्टिकल 40 सेक्शन पे करेक्ट करबा चैलेंज कले मद्रास हाईकोर्ट रो ऑर्डर को इफ राइट कले तुम आर्टिकल 14 रो स्ट्रिक्ट मद्रास हाईकोर्ट वर्डिक्ट देला ये स्ट्रक डाउन देला कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर को तापर गवर्नमेंट गला देन मद्रास गवर्नमेंट जाकी अपील कला कोंटी ना सुप्रीम कोर्ट देन तापर फाइनली ऑन स्टार्ट कला स्ट्रक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन then allow reservation only in public jobs article 60 or led to first question
एंड फर्स्ट क्वेश्चन तार चैलेंज करिकी हला 50 हला एवं स्टेट करि परिबो स्पेशल क्वेश्चन फॉर सो नॉट ओनली दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड इन ये 9 यार्ड साड़ी अति चमकम very important judgment, very important first article, first amendment range आम फर्स्ट अमेंडमेंट जोटा कि आम देखिए in what do you understand by cooperative understand by exist what do you understand by cooperative federalism center and states work together achieve one national goal common national while respecting each other's respecting unlike competitive or dual federalism where powers are rigidly separated cooperative federalism is coordination cooperation, and collaboration the different cooperative federalism कौन कहूँ interstate relation really work together in a to achieve common national goal while respecting each others while respecting competitive dual federalism cooperative है really coordination collaboration or consulting okay it is based on the shared response the dependency formulation so very clear cut introduction introduction must be like this ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ introduction एग्जाम में जी देखिबो ताको गोटे ताको आखी को बेटर लागिबो तो क्वेश्चन आसीबो द वेल तुम पॉजिटिव माइंडसेट आसिले ट्राई टू डू लाइक दिस बड़े वर्ड हला कोऑपरेटिव ताको की फीचर ऑफ कोऑपरेटिव गवर्नमेंट इंटरेक्शन विथ डिफरेंट shared response center and state the response mechanism what is like financial आयोग facilitate ओके तो कौन कौन देख कि फीचर इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से इंटरेक्शन न कामटा हम शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी समस्ते जी जार फंक्शन मेकानिज्म फाइनेंस कमिशन नीति आयोग ये सब गोटे कोऑपरेटिव कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करे इंडिया रे जो देखिबो मध्य फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रांगली बट फेडरल स्ट्रक्चर नॉट एज फेडरल एज यूएस बट यांक भीतर काम जदि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रो वेरियस प्रोविजन अच्छी कोऑपरेशन इंटर स्टेट काम फाइनेंस कमीशन इंडिया सर्विस which integrate the administrative transfer and GST आयोग further embody cooperative सब जगह डिसीजन मेकिंग रे माने रूल प्ले स्टेट काउंसिल हो फाइनेंस ऑल इंडिया सर्विस हो देन अपन थ्रू रे से ट्रांसफर जो आसेस
पाखु सेटा ट्रांसफर करती अब रहिबो आयोग आयोग however challenges such as central domination of 10 as national GST that cooperative vital living fee is evolving and it is day by day evolving. COVID-19 को केमिति एत बड़ इंडिया रे तो ये क्वेश्चंस तो या ऊपर वैल्यू एडिशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैला कोन ना नेशनल हो स्टेट हो लोकल गवर्नमेंट वर्क टू काम करी ऑन इशू तो एटा एसेंशियल कोन ना इफेक्टिव कैन कॉन्स्टिट्यूट प्रमोट करे कोलैबोरेशन even though it does not explicitly term instead it encourages collaborative among background roots of the cooperative federalism can be back to the which establish a framework for local government ये एक्ट रू आम जापर लोकल गवर्नमेंट एंड वेरियस एक्ट मध्य जोटा धीरे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1955 फेडरल स्ट्रक्चर ग्राउंड वर्क रेडी करथिला आम धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो देखियो ये सब नोट्स तुम पाई आर्टिकल 54 this article ensure represented in the election that in the president where members of legislative assembly part of the article 80 it provided for the union legislative article 246 along with in the subject on which center and state can legislate or matter in the ये सब बेसिकली आर्टिकल मध्य नोट करूची कोऑपरेटिव फॉर प्रेसिडेंट जब इलेक्शन होची स्टेट लेजिस्लेटिव काम करूची आर्टिकल 80 रे काउंसिल ऑफ स्टेट सेथरे स्टेट्स एंड यूनियन सेथरे पार्टिसिपेट 46 7 state and concurrently okay so the role and impact and challenges of the democracy pressure group of the individual the organized group organized groups public pressure group रे every year question या ऊपर so organized of individual who seek without directly seek they act as a bridge and the government articulating the demand and request and the govern means government दी जन के भीतर ब्रिज भलिया काम ये ना प्रेस भीतर
Rule of pressure group, strengthening democracy. Voice break होची. ଏବେ ଦେଖିଲ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖିଲ କେମିତି ମୋ ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି ନାହିଁ? The rule of pressure group is strengthening interest articulation. The pressure group being the demand and the needs of the people. Yeah, very important. Very important. Interest articulation. So, ये माने कौन कौन डिमांड करती? लोकंकर डिमांड जहाँ था, लोकंकर जहाँ नीड था, से एमती एंटी करप्शन ग्रुप 2012 रही करप्शन इश्यू को उठेले एंड लॉ मेकर बाध्य करेले टू मेक कलेक्ट देखो क्वेश्चन का आंसर लिखिबार गोटे ट्रिक है कौन मु डायरेक्ट लिखि था कौन लिखि था इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और प्रेशर ग्रुप कि डिमांड एंड नीड्स लिखि था बट थिंग इज एटा लिखिले मार्क मिल नता कि ता सहित मेक इट बेसिकली justifiable not like answering anything else कि लिखि दे पॉइंट खाली लिखि दे पड़े justify by through your exam best way as legislature so ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସାଇଜ୍ ପପୁଲେସନ୍ ସାଇଜ୍ या ପୁsh କରନ୍ତି pass and implement law कि interest group ର belief to uphold the interest group Pyqs advocated for removing obsolete law कि लॉटा यूज हो बारंबार सेटा को सेशन होची एवं से लॉ रो किछि obsolete हो जाइछि आउटडेटेड लॉ ताको हटेया पे गोटे ऑर्गेनाइजेशन के करे ताले एक्ट एज एजेंट ऑफ पॉलिटिकल socialization interest group कौन करे ना educate the mass interest group educate the mass also tend to change the status quo also tend to change the status quo बेसिकली कौन एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ये मासेस देखो करप्शन रिलेटेड इशू करप्शन कौन कौन इशू ओके स्टाटस को चेंज करने फ्यूचर गोटे रूट कम्युनिकेशन करती बिटवीन गवर्नमेंट सहित कथा करती कथा कहती कम करती कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल हरिजन सेवक संघ was pioneer in educating people during temple entry movement तो हरिजन सेवक संघ किए करथिले प्रेशर ग्रुप एज ए फीडबैक मेकानिज्म गवर्नमेंट फीडबैक नियन ओके दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन विथ एडमिनिस्ट्रेशन बेटर इंप्लीमेंट पॉलिसी केमती एडमिनिस्ट्रेशन यांको पाखरु आइडिया नहीं गवर्नमेंट बेसिकली पॉलिसी रे तांको कंसल्ट या अमेंडमेंट करे किछि रूल जेमिति गोटे फार्मर इशू फार्मर पाई सरकार लॉ बनै लॉ फॉर्मुलेशन करला बेले पचार नथिला बट इम्प्लीमेंटेशन बेले ताको सरकार को बाध्य हले ताको हटेया पाई तो एनजीओ भलिया काम कले सेठी से तो जे देखिबा फॉर डी द डिबेट दिस दिस एंसुअल कि फॉर्मुलेशन करिबा अमेंडमेंट सबमिट करिबा एग्जांपल देखिबा द लॉयर्स एसोसिएशन इन helping people who have not found their name in the national register asi sarkar karithil by working with officer in a foreign सहित लॉयर एसोसिएशन की आसाम रे तांको एनआरसी रे ना देन एज फैसिलिटेटर ऑफ प्रोग्रेसिव
से सोसाइटी रो फैसिलिटेट करती काना ये सेफ्टी वाल्व भलिया काम करती कलेक्टिव ग्रीवेंसेस लोकंकर सब सोशल चेंज पई या जा इश्यूज अछि सेटा को नै आसंती एवं प्रोग्रेस जेमिति गोटे अक्षरा ए मुंबई बेस्ड प्रेस लबिंग करूची अगेंस्ट सेक्सिस्ट लिरिक्स लबिंग अगेंस्ट सेक्सिस्ट in Bollywood has lit a spark the film industry where many singers have stepped back from such song जने माने लॉबी कले माने सोशल मीडिया वगैरह सब प्रमोट कले सेक्सिस्ट लिरिक्स जो माने अछन बॉलीवुड मूवी तांको हटा जाऊ तांको एगेंस्ट एटा धीरे धीरे इंडस्ट्री रो ए हला एवं सिंगर से गाया पई impact कौन प्रेशर ग्रुप तो प्रेशर ग्रुप strengthen participate write it down all these points write it down right now then only you will able pressure group strengthen participatory democracy by ensuring broader consultation in they help in inclusion of marginalized promotes policy check governmental or participatory democracy को केमिति by consultation and ସେମାନେ marginalized voice को करूछन help in marginal promote policy check governmental unequal influence challenges कौन unequal influence free and organized group often dominate sideline the weaker lack of internal democracy transparency so coercive or disruptive method like so corrective coercive and disruptive method like and one and politicization and nexus political parties dilute their independence जहाँ राजनीति डेमोक्रेसी न था ट्रांसपेरेंसी सो ये सब प्रॉब्लम्स आसे कि challenges pressure group are essential for a vibrant democracy as they depend then as participate make make vibrance and transparent active engagement is crucial for end of so pressure group रे डिटेल आपण माने मार्क रखु around 10 mark you will get pressure group या ऊपर वैल्यू एडिशन चाहिले इवैल्यूएशन टेकओवर basically what are the similarity and difference French constitution ଅଛି ସେ Indian constitution 1950 and French the framed different shared democratic French revolution or the idea of liberty came into it. Okay, so they differ significantly in structure of the government and politics. ତାଙ୍କର structure obviously then ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ structure ଆସିବା ପାଇଁ time ଲାଗି form of government and similarities preamble and fundamental rights preamble constitution have preamble emphasized fundamental yes preamble emphasized and fraternity mirroring French France community আছে আমার বিষয় তো similarity ଅଛି under principle French constitution secular French constitution
नेगेटिव सेक्युलरिज्म हमें इंडिया कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम सही सेक्युलरिज्म या अडॉप्ट पॉजिटिव that means diverse state promote positive fundamental ensign in both parliamentary country parliament or head of the state and prime minister is the head of the government. Indian president hold more full with or while French president possesses substance that semi-presidential system. So both are the parliamentary president hold or executive ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଞ୍ଚର directive principle and social justice. Constitution include directive principle and objective of France, guiding the state in the matter of. But India's directive principles are more deep. France रे order federal structure constitution provide for yeah central state. India is a federal. Okay, both countries allow amendments to accommodate social needs. India follows rigid amendment procedure, offering special majority. France has a more flexible joint session. Here, amendment hobata difficult. Influence. B.R. Ambedkar and other constitutional school. ସବୁ ତୁମର क्लासेस रे पढ़ाई छी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जापान कॉन्स्टिट्यूशन आयरिश अच्छी बट मेजरली इंपोर्टेंट है आमर फ्रांस देन यूएसए जापान so while both constitutions are rooted in democratic and republican values, the Indian constitution represents federal parliamentary emphasizing collective responsibility and social, whereas French constitution semi-presidential has a strong executive and central. Clear? होची बारंबार कहीं होची तो तुम कम है जेहेतु सी लास्ट ईयर पकई फ्रेंड्स देख आउ थे कमी कौन शुभा हो सो लास्ट ईयर जेहेतु अलरेडी क्वेश्चन आस तो बेटर कौन हम ना तुम्हें ये वर्ष देख ये वर्ष आउ कंपैरिजन टू चाहे यूके एसए ये सब आर्टिकल 1 of the French Constitution, France shall be an indivisible, secular, democratic. 1905 law on the separation of states and state. It prohibits state from recognizing any state दूर रहिबो फर्क किछि नाही religion. French government ban wearing advisory loose fitting full length robe worn by the same some Muslim. State run this ban has implemented at the state, citing and violating the French sector. French authority initially barred women athletes during the then French sports minister announced ban in एमती फ्रांस सेक्युलरिज्म टार्गेट करा जाए कि मार्जिनालाइज या मुस्लिम कम्युनिटी को टार्गेट करा जाए ये सब या टेंशन से धीरे धीरे ग्रो हो
पेरिस रे जो बम इश्यू हेतला ये लिंक्ड अछि डिफरेंट अप्रोच ऑफ सेक्युलरिज्म तांगर थाए प्रिएम्बल आम इंडिया रे जो सेक्युलर अछि सेटा 42nd अमेंडमेंट रे ऐड करा हेतला ओरिजिनली नथिला बट 42nd ऐड कला परे तार डेफिनेशन इज डिफरेंट जोडे कि स्टेट शुड प्रमोट ऑल रिलीजन इक्वली बट in France this France don't know France constitution don't know the administration they do not know religion that state have full in religion what is due process of this is also very important what does it differ from procedure article 40 article 15 of the article 14 of the constitution both due process of law and procedure established sorry not article 40, equality before law equal protection article 21 में है लाइफ एंड से एक्सप्लेन करे यार कॉन्सेप्ट दीटा का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपोर्टेंट एवं बहुत सारा एग्जाम रे एवं इंटरव्यू रे मध्य को दे आस्क द are principles that regulate the relationship between due state and individual property ensuring that no person is deprived of life or really but judicial interpretation यार अलगा अच्छी एंड यार नेचुरल जस्ट ये ऊपर हम देखिए सर ड्यू प्रोसेप्शन लॉ ड्यू प्रोसेप्शन लॉ इज द लेटेस्ट वन ओके इनिशियली वी फॉलो द प्रोसीजर एस्टैब्लिश द लॉ द्वारा प्रोसीजर जो लॉ बने द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसेप्शन of due originated the United States Constitution means that law must be fair, just and reasonable, and the procedure through which person deprived of the life or liberty is fair. It has two components. Good procedure established procedural due process. There is procedure due process mane ensure fair and proper procedure in the implementing the law, and substantive due process ensure that law itself is fair, just, not arbitrary. Law बनावो fair each other. The court can question not only the whether the proper procedure is followed. Law बनिया पे जो procedure है सेटा follow है ना नहीं सेटा नुआ. Law must be fair each other. Not violate the fundamental justice. So procedure established by law कौन? Concept originated in Article 31 of the Japanese. Japan was in 1940 adopted in 1921 article of the Indian Constitution. Means that no person shall be personal life and liberty कथा कहूची. No person shall be deprived of life and property except according to the procedure established. So there the focus is whether law exists or whether the procedure prescribed by the law is flawed or not. केवल प्रोसीजर ऊपर से देखुची सी आ देखुनी लॉटा जस्ट होची या फेयर होची या नो दे आर ओनली सीइंग द बेसिकली लॉ जोंडा बना होची जो फॉलो करा होची लॉ बनिया पई एटा ठीक अछि ना इट डज नॉट द फेयरनेस और रीजनेबलनेस ऑफ द लॉ okay it does not establish questions the fairness and reasonableness of law itself thus if parliament passes law procedure is followed the deprivation of liberty is gone then if the law is okay एठी लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ रे कोन ना लॉ अनफेयर हुए या अनजस्ट हो किसी मैटर करे या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट प्रोसीजर मस्ट बी फॉलो बट ड्यू प्रोसेस लॉ रे बूथ रहिबा दरकार प्रोसीजर मस्ट बी फॉलो and as well as law must be fair and just होइता एठी फेयरनेस कथा दिया होची आर्बिट्ररी हेइ नथिया दरकार मन इच्छा कुछ भी लॉ बनै परिबे प्रोसेस लॉ मेनका गांधी केस रु यारे उद्गार हेइतला तो की डिफरेंस जे देखिबा दीटा भितरे ये एनश्योर लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश माने कोन लॉ जो बना होची सेटा तो प्रोसीजर बनेबा पई सेटा ठीक से करिचन बट एठी देखुची से लॉ हेइ साला परे से लॉटा फेयर अछि ना साइड अछि ना नहीं रीजनेबल
प्रोसीजर जापानीज ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जापानीज प्रोसीजर इज वैलिडिटी ऑफ द वैलिडिटी जते पर्यंत अछि ए प्रोसीजर सब्सटेंसिव जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल error I check only the procedure compliance केवल प्रोसीजर देखुछि error a broader both procedure as well as substantive aspect uphold law even if they are unreasonable or unjust law ठीक हबो law को माना जीव law जदि बनेबार प्रोसीजर ठीक अछि चाहे अनरिजनेबल हो या बट एठी स्ट्राइक डाउन कर कि मेनका गांधी केस रहितला explicitly reference article 21 of the constitution explicitly interpreted through limited court do extensive strike down on just law AK Gopalan versus State of Madras 1950 इंडिया रे एक गोपालन वर्सेस Madras of State of Madras एग्जाम माने प्रोसीजर एस्टैब्लिश हेलो हितला एवं मेनका गांधी वर्सेस 1968 ड्यू प्रोसेस वेरी वेरी these are you need to remember and ये केबे केतेबेले भी आसी पारे चाहे एवरी फेजेस ऑफ ए एग्जाम रे ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 20 originally article 21 of the Indian Constitution followed the procedure ପରେ मेनका गांधी केस रे लैंडमार्क जजमेंट मेनका गांधी या ସେଇଥିରେ ଆସିଲା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ସେଇଥିରେ କହିଲା କି ଭାଇ ड्यू प्रोसेस आर्टिकल 21 मस्ट फॉलो the procedure must be right ହେଇଥିବା ଦରକାର just ହେଇଥିବା ଦରକାର fair ହେଇଥିବା and not arbitrary ହେଇଥିବା fanciful or oppressive no not arbitrary not fanciful because India has effectively adopted the essence within the framework of तो आमे जो लिखि परिबा due process of law equal to procedure established by law plus law must be fair reasonable just right reasonable not arbitrary fanciful and oppression this is you need to remember you need to link okay this is very very important while procedure establish a law your legality due process law or the judicial interpretation is after yes article 21 now embodies both procedural and as well as substantive safeguard of the law achieving the balance between state authority and individual state मन इच्छा law बनेगी that is the issue this is a very very important topic to sir AK Gopalan write about e-governance initiative it's a very important among questions is regarding e-Sishu project e-Sishu a major e-governance aimed at creating a comprehensive child tracking system for effective implementation of elementary this is very very important गवर्नमेंट कौन करुच्ची कंप्रिहेंसिव चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम बनाऊँ जो एलिमेंटरी एजुकेशन को केमती चली एंड इट इज पार्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान SSA framework and reflect the state commitment inclusive and transparent education governance through and education governance ये इंट्रोडक्शन थी ऑब्जेक्टिव कौन डेवलप चाइल्ड वाइज डाटाबेस all children 0 to 40
in state to ensure universal enrollment, retention, competition, elementary education, universal enrollment, retention and competition, elementary. प्रथम है चाइल्ड वाइज डाटाबेस दरकार कि 0 to 14 ईयर केते एनरोलमेंट होउची एवं एनरोलमेंट सहित केते रिटेंशन होउची एवं एलिमेंटरी एजुकेशन केते जन कंप्लीट करूचंती एलिमेंटरी एजुकेशन केते जन कंप्लीट करूचंती to identify and track out of school or drop out and never enrolled children, provide real time data for planning, monitoring and policy. Key feature: comprehensive database. Each child is assigned a unique identification number, dice with details like name, age, gender, name, age, address, school and attendance. Database kuaji. So e शिशु जानी नथियो ताले एटा लेखियो डिफ then school सहित integrate करे data is collected and updated at the school and block accuracy ताको monitoring करिबा education authority monitor करिया कि enrollment केमति trend infrastructure कोन दरकार कोन problems teacher student ratio केते ठीक अछि ना नहीं decision support system ये government को एनाउ करिया कि plan करिया पई कि केमिति targeted intervention करिया for marginalized group girls different able ratio तांगर अछि reduces duplication of data and bring efficiency and transparency in educational significance. Support full education for right to act. Enhance data driven decision. Enhances data driven education. Helps in identifying learning gaps and ensuring that no child is model of digital governance. Digital governance initial sector recognized nationally for great of so innovative use of ये बहुत बड़ इनफॉरमेशन एटा आई होप तुम जानी नथिबो कान ओडिसा स्पेसिफिक मु किछि आनिबी तुमको स्कीम हो गवर्नमेंट कोन कोन स्कीम इंप्लीमेंट आगु को चाहे पॉलिटी रिलेटेड हो या एनी अदर रिलेटेड कम टू देन यार कंक्लूजन देखिबा so the e project of Odisha exemplify how particularly in education are digitizing child data and linking and project promotes transparency, moving the state closer to the vision. Okay. Universal elementary education. या उपरे ई शिशु प्रोजेक्ट उपरे जोडे गवर्नमेंट थिला ता उपरे डिटेल्स है Odisha state continue to have unresolved border Andhra तो या उपरे देखिबा कोन कि लास्ट क्वेश्चन साजिरो Odisha share its southern border with Andhra Pradesh stretching over 470 administrative demarcation तो अछि but India's independence पर ई सब चलछि but border dispute still continue बहुत सारा विलेजेड जोंटे कि अनडिवाइडेड गंजाम गजपति एंड कोरापुट मिसिक थिला ना आंध्र प्रदेश तांको भीतर बेसिकली mainly over the village located along the undivided Ganjam. These disputes basically are rooted in the historical and administrative ambiguity, dating back to the colonial and post organization. So, the origin of Odisha and this border issue lies in formation of linguistic state है Odisha. India speaking track separate है Madras presidency. जानते हो ओडिशा या पूर्व तीनटा प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी आउडला सेंट्रल प्रेसिडेंसी एंड स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट हला 1936 रे हला देन सब अलगा हले स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट हला 1950 सेइथरे बॉर्डर विलेज थिला ए मिक्स्ड पॉपुलेशन किसी
तेलुगु कहते से माने ओडिसा रे रहियो चाहनथले तांको रिलेटिव रहउथले त तांको सहित एम्बिग्युटी थिला डिमार्केट करिया पे आईन गोटे हला कि अराउंड 20 टा खंड विलेज अछि से एरिया रे जोडे किया ग्रुप ऑफ विलेजेस या मन कुटिया ग्रुप ऑफ विलेजेस इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट claimed by claimed by ये आमे भी कहू कोरापुट डिस्ट्रिक्ट major area of conflict kutia cluster of villages located in border of Koraput district and Vijayanagaram Andhra Pradesh. Okay. Both state claim administrative jurisdiction, hold election and implement welfare. State claim election and implement welfare. The resident the resident possesses equal ration card. Both state reflecting the overlap इटा रेशन कार्ड होची एडमिनिस्ट्रेटिव ये होल्ड इलेक्शन होची एंड वेलफेयर स्कीम भी होची दीटा स्टेट रु से पाउछंती दीटा रेशन कार्ड भी अच्छी वोटर आईडी भी अच्छी दीटा स्टेट रु तो ये ओवरलैप गवर्नेंस सेठी चली कोटिया ग्रुप ऑफ 2021 रे आंध्र प्रदेश गोटे पंचायत इलेक्शन होता रे कोटिया विलेज बेसिकली डिस्प्यूट होता स्ट्रांग सेटा ओडिशा को प्रोटेस्ट ओडिशा पिटिशन करथला सुप्रीम कोर्ट फाइल कला केमती तुमे इलेक्शन एडवाइज बोथ स्टेट टू मेंटेन स्टैटस रिजल्व द इशू इशू अछि तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेट बाउंड्री कमिशन फॉर एक्यूरेट कौन करा जाय पारे आगु इंटरस्टेट बाउंड्री कमिशन क्लियर डिमार्केशन हो जाओ स्टेट स्टेट कहार एठी क्या पड़े आसो कहार कम पड़े आसो जॉइंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन एरिया एसपी central mediation under the union ensure an impartial solution implementation of confidence building among local community कौन सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा मीडिएशन तो दरकार भाई खास करके होम मिनिस्ट्री अंडर आसुची पार्शियल रिजोल्यूशन गोटे बाहर करंतु कॉन्फिडेंस बिल्ड लोक भीतर बिल्डिंग मेजर करंतु भाई आमे समस्त निज देश लोक भीतर ये आसीयो आंध्र प्रदेश बॉर्डर डिस्प्यूट रिफ्लेक्ट लीगल and challenges federal coordination in it. While both state assert constitutional claims, dialogue based on people-centric approach essential to government and cooperate. क्लियर तो या उपरे आउ जदि डाटा इनफॉरमेशन अच्छी कि ओडिशा केबे हेतिला कोन हेतिला बॉर्डर डिस्प्यूट कोन कोन ओडिशा बॉर्डर डिस्प्यूट फॉर नाइबरिंग स्टेट इन इट्स 8 आउट ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट 8टा डिस्ट्रिक्ट 30 डिस्ट्रिक्ट 14 of the 13 districts share border with Andhra Pradesh, West Bengal, Chhattisgarh, Jharkhand. Andhra Pradesh, West चारिटा स्टेट सहित आमर डिस्प्यूट 30 डिस्ट्रिक्ट टू 8टा डिस्ट्रिक्ट however dispute over Kotia village in Koraput district bordering Andhra Pradesh is the only major border conflict सब कोटिया ये सब वाटर डिस्प्यूट अच्छे आंध्र प्रदेश कि स्टेट एक्ट होते इंटरस्टेट रिवर वंशधारा रिवर पे गोटे डिस्प्यूट अच्छे सिमिलरली फॉर परसिस्टेंट एम्बिगियस एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस तो ये थिला तुमर फर्स्ट 7टा क्वेश्चन देखिले आमे माने बुझी पाले कि हाउ टू राइट द आंसर तो आपन को मंगलवार दिन सॉरी संडे दिन आपन को टेस्ट हबार तो समस्ते सही भलिया रिवाइज करंतु जो जो एरिया क्वेश्चन आसुची ताको आउटी एक्सपांड करंतु ताको बारंबार देखंतु एवं भलसे आंसर ट्राई करंतु दैट्स इट फॉर टुडे सो या नेक्स्ट क्लास रे हमें 8 नंबर पाखु देखिबा आगो को
तो जी मेंस टेस्ट सीरीज जॉइन करना ऑप्शनल मेंस फाउंडेशन एंड ऑप्शनल मेंटरशिप और सोशियोलॉजी रो एंड मेंस रो टेस्ट सीरीज एंड मेंस रो मेंटरशिप मध्ये सेटा समस्त जॉइन करंतु टेस्ट सीरीज बिना आपण सिलेक्शन हो टेस्ट सीरीज इज मस्ट थैंक यू गाइस सो आपण 896 এই নম্বরে কন্টাক্ট করবে ফর টেস্ট সিরিজ অর মেন্টরशिप रे आमे एई भलिया सब क्वेश्चंस बेस्ड एवं वैल्यू एडिशन देकी आपनको प्रिपरेशन दैट्स इट फॉर टुडे गाइस थैंक यू